standard which functions in free independence between and more accessible to all users. Library advisory committee, principal of the college is chairman, head of the departments are members, academic secretary. You go to the data, sir. Yeah. These are the Best practices, code ठीक है, yeah. seat number taken system ठीक है. What is your qualification? You please tell us. MA, MA? MU. Both. Yeah. How many years you have been working here? 10 years. Last 10 years. Prior to that, Another college. another. This It's a Okay, transferable job. transferable. No? Our Sanstha has many colleges. Oh. So they transfer us from one place to another. How many books you have? Come to the data. Next. आप मेरे को टाइटल बताइए, नंबर बताइए. टाइटल कितने हैं? कितने टाइटल? Titles 18,000. हैं? More than 18,400. एग्जैक्ट नंबर बताइए. नंबर लिखना पड़ेगा. Exact number. देखिए मैं जो नंबर पूछ रहा हूँ वो रिफ्लेक्टिव रिपोर्ट. 69,502. 69,000. 502. जो journals, Journals 110. टाइटल और नंबर. Number journals. 110 number. Out of these names All are are online journals, e-journals. e-journals more than 16,000. These are all These are hard print. 104 110 hard are hard print. 110 or 110. Okay, hard print. Hard print. Just a minute. Online more than 16,000. 16,000 e-journals. Through Enlist and Enlist and other links are there collected. 1307 books. Next. In research representation, there are 61 general encyclopedia, subject and general encyclopedia, hundreds of dictionary, 417 latest bound volumes of journal, 704 words are at first floor, 110 subscribed national international journal, 09 international journals out of this, 1307 e-books, 23 newspaper, 29 bibliographies of special literature. कुछ सुनिए दो बढ़िया इंटरनेशनल जर्नल्स का नाम बताएंगे कौन से हैं लाइब्रेरी में? वो तो देखेंगे हम लोग, लेकिन फिर भी द टॉप मोस्ट इंटरनेशनल. International Journal of Mathematics, Trades and Technology, इंटरनेशनल Journal of Mathematics, Trades and Technology. Another one, Bulletin of Calcutta Mathematical Society. Another one, Journal of Ramanujan Mathematical Society. Another one, मुझे बताइए यहाँ जो टीचर Economics का एक journal बताइए. Economics का नहीं सर, Chemistry के 2 है, अंग्रेजी आपका जो 110 है hard print. हाँ, इधर economics नहीं है. नहीं Economics जर्नल है, लेकिन इंटरनेशनल है उसमें. अच्छा हाँ, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल वीकली होगा. Economics का EPW. अर्थ संवाद करके का इकोनॉमिक पॉलिटिकल Economic political EPW. EPW है ना. और इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स है. IUP आपका रिपोर्ट में जो लिखा है लाइब्रेरी इज वेरी रिच लाइब्रेरी. या We have to see. But We have report to में see. बढ़िया है. We'll see. They had. All best things are there. या Next. here is book and schemes. And they have a book borrowing scheme also. No, Book loan scheme. BC book and यूनिवर्सिटी का ग्रेड्स मिलते हैं. नहीं, वो जो आपने लिखा है Interlibrary loan. That only Yeah. have also. उसकी कैटेगरी जो है तो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी से भी है और आप आपका वही लेते हैं, वो आपका वही लेते हैं. उनसे हम लेते हैं. हम और लेते आप हैं. वापस करते हैं. हाँ, वापस करते हैं. लोकल So कॉलेज do they charge anything? Yes. Yeah. They charge us. And it's a kind of annual subscription we have. अच्छा And we can take any book and it's on phone. Like And or they will email. send it. They will send it or we can go and pick it up. Oh, It with TISS also. Tata Institute of Social Sciences you Library. have regulated Yes. before. Next. That is here. At ground floor, here is our textbook section and research section.
नेक्स्ट ऑनलाइन ई लाइब्रेरी जो है उसमें नेक्स्ट some important links with their e-resources. World e-book, more than 25 lakhs books are available on website. American library books, more than 23 lakhs. Kenyan library books, ठीक more है. than 5. What is the total expenditure of the library in a year? For book purchase, 11 lakh. बहुत Next. बाकी Journals? हाँ? Journals के लिए कितना? journals के लिए 1 lakh के आसपास. 1 लाख में इतना मिल जाता है. नहीं, ये हमने क्या किया है, वो फ्री एक्सेस जो है ना स्कॉलर उसको सिलेक्ट करके लिया है, थोड़ा स्टडी करके ये सिलेक्ट करके लिया है. 150 लिंक्स है उसमें अच्छा. कि जो स्टडी के लिए, रिसर्च के लिए यूजफुल है. आप स्टडी, आप जितने जर्नल का आप खर्च कर रहे हैं, हाँ. आपका जितना पब्लिश एजुकेशन है इंटरनली ईयरली, मान लीजिए आपका 1 लाख खर्च होता है, आपका पब्लिकेशन इतना, आप कैलकुलेशन क्या पर यूनिट कॉस्ट ऑफ पब्लिशिंग द पेपर As per the library expenditure. एक्सपेंडिचर एंड पब्लिकेशंस. Okay. आप थोड़ा ये आपका ऑडिट में आता है. ICT का यूज पॉइंट्स में किया जाता है. पूरा बारकोड में कंप्यूटर सर्कुलेशन होता है. सब ई बुक्स है, प्रिंटर्स है, इंटरकॉम, टेलीकॉम, वायरिंग, इंटरनेट, वाईफाई, इंटरनेट वगैरह. नेक्स्ट When a librarian with qualification is there, everything is taken care of. If that person is not there, then library will be meaningless. Very correct. I am telling out of my experience of visit to our colleges. next. There are 32 services are delivered to all users, staff, faculty and Book donation is there. बुक डोनेट होते ना, Okay. मिलते ना. यहाँ की जो भावाट में अगर यहाँ का टीचर लोग डोनेट करते हैं. हाँ देते ना, हमारे यहाँ आते ना, वो उनको उनके डिपार्टमेंट के लिए देते हैं. अच्छा. हाँ, इधर रखने के लिए बिना ज़्यादा डिपार्टमेंट होते हैं. डायरेक्ट यूज होता है, इसलिए देते हैं. अच्छा, डिपार्टमेंट लाइब्रेरी इज मैनेज्ड बाय यू indirectly. नो, वी आर गाइडिंग देम. Guiding them. They are independent. हाँ, दे आर इंडिपेंडेंट. वी आर गाइडिंग. उनका वो आपका उनके जगह पास लाइब्रेरियन कोई नहीं होता, वो अपने आप खुद ही कर लेते हैं. उनको बताते हैं ऐसा करने का, रिकॉर्ड ऐसा रखने का, लेन देन ऐसा करने का. नेक्स्ट, ब्रेन एक्टिविटी हमारे यहाँ बाबा साहब अम्बेडकर का जो अमर बाबा पाटिल बुक्स गैलरी पे हमने बनाई है. स्पेशल फैसिलिटीज, लाइब्रेरी यूजर्स फीडबैक सजेशन, वीआईपी विजिटर्स फीडबैक, डिपार्टमेंटल लाइब्रेरी गाइड्स. इट्स फुली ऑटोमेटेड लाइब्रेरी. या कंप्लीटली. बच्चे लोग बाहर से देख सकते हैं. वे कौन सा मोबाइल book पे है. व्हाट इज द फुटफॉल? कितने बच्चे आते हैं? नियर अबाउट यहाँ 4 से क्या आ गया थे, 400 के आगे. पर डे. हाँ वर्किंग डे में. हाँ. अच्छा, ये 24/7 है कि कितना घंटा खुलते हैं? हाँ, मेरे आपस में ओपन Like है. 24/7. लाइब्रेरी 8 AM to 6 PM पूरा दिन. And on the holidays it's closed. नहीं ओपन रहते हैं. Open रहता है. Sunday half day. Sunday half day. अब मैं इसके अलावा एक चीज़ पूछूंगा जो सिलेबस में नहीं है, जी सर. मुझे दिमाग भूल ना जाए. This whole section is about our management section. This section, whole section is almost curriculum, which is our online learn scheme schooling, works part-time. This is entirely management science, commerce, law, all these books. When they take out the books, they are not, they cannot keep it back. Like library staff takes care. Do you have statistics? Statistics book and industry book. Essential book for commerce. This
and students have complete freedom to walk in. ये कॉमर्स सेक्शन है। आप बताइए मैडम अभी नहीं बताया आप बताइए सर नहीं थे सीनियर मोदी एक्सपर्ट आईपीएस कॉमर्स सेक्शन है। हाँ सिलेबस स्टडी के लिए कौन सा भी किताब स्टूडेंट लेकर पढ़ सकता है। अगर कोई मिलता ना तो पैकेज सिस्टम में मिलता है। अच्छा बढ़िया है तो इसी और उसको चेक करके और इनका का असिस्टेंट जो रहता है ना 1 ईयर स्टूडेंट रहते हैं या जो पास स्टूडेंट रहते हैं वो हेल्प करते हैं। किताब निकालने के बाद ऊपर रखने का काम जो है हमारा असिस्टेंट का स्टूडेंट को रहता है और ये सेल्फ रीडिंग के लिए बना है खास ऐसा इकट्ठा बैठ के नहीं स्टडी करना। लेकिन रीडिंग रूम इज वेरी स्मॉल ऐसे तीन क्लास तीन है ना ये खाली कॉमर्स का वो खाली कॉमर्स के लिए से साइंस के लिए अलग आर्ट्स के लिए अलग अलग साइंस इसके लिए आई टी कंप्यूटर साइंस के लिए रिसर्च सेक्शन नीचे का वो आ गया। घर में तो नहीं होता है घर में किधर भी बैठते हैं लैब में भी बैठ ऑनलाइन ही किया ना सर। सर आई ऑनलाइन है हाँ, सब लेकिन नेटवर्क वर्जन जो है ना आप तो बाहर नहीं कर सकते नहीं बाहर उनका पर्सनल ये दिया हुआ है ना पासवर्ड तो वो देख सकते हैं रेगुलर मोबाइल में देख सकते हैं ऐसा हो गया। खाली उन्होंने दिया है हमने कुछ लिंक्स लिए हैं ना उसमें इंटरनेट फ्री भी है विदाउट पासवर्ड भी है। सर जो नेटवर्क वर्जन में because I'm talking about Pondicherry University. हाँ हाँ So you mean the university where I'm presently working, it is in the process. We have 35 crores project which is going on. हाँ हार्ड कॉपी आपको बनेगी सॉफ्ट कॉपी आपको तो पेंड्राइव देंगे ना वीडियो डालेंगे और स्टोरी 3 कॉपीज भी ये of 3 copies of Shruti and 3 all books. ये भी है Important one. We read every day. Actually, it is there, but we just said suddenly we skipped करो. Environment consciousness वाला activity था ना, उसमें वो सब है. that's the result. It is there. Result. Yes, it is there. In fact, but आप उसको उसके ये चेंज होगा चेंज होगा इसीलिए तो ऊपर हमने देखा ना सर plants. हाँ। वही है. हाँ प्लान हो गया हाँ वही. फास्ट है इधर वाला हेलो आपने क्या किया है इंप्लीमेंट जाएगा ना साइंस जाएगा
साइड में I have seen this. ऊपर just शॉर्ट्स कहाँ है? उसको क्लिक किया तो ऊपर में ब्राउज ब्राउज कहाँ है? यहाँ क्लिक किया तो आपको पूरा किताब का ना वो मालूम है, मुझे तो लग रहा है ये टीम में मैं सर्च करूँगा। सर्च कहाँ है? वो पीछे ये यहाँ पे ना, पीछे होम पे जाएगा। ये यहाँ पे सर्च होगा हाँ ना? हाँ प्लस सर्च में फील्ड सर्च सर ये साइन जा रहा है नहीं है। लिंक आएगा उधर उधर जाना पड़ेगा ऊपर लगा सकते टाइटल नहीं, जर्नल का टाइटल जनरल बुक्स मिलेंगे यहाँ सर नहीं, जर्नल कहाँ है? जर्नल का ऑनलाइन जर्नल का वो यहाँ से बाहर निकलना पड़ेगा ओपन में नहीं है कुछ ओपन अच्छा। खाली कॉलेज में जो है ना लाइब्रेरी में उसका ओपन है इन्हें मिल गया तो उसमें कुछ किताबें होनी थी ना सब As well as introduce our eminent NAC peer team members. I first introduce you to Professor Sahu, who is a chairperson of this NAC peer team. Then we have Dr. Gupta, S.L. Gupta, who is a coordinator of NAC peer team. And we have Professor S.K. Swan, who is a member of this committee. Thank you so much. Have the winters, the spring would not be so pleasant. If we do not sometimes taste the adversity, the prosperity would not be so welcome. Keeping up the tradition in the proverb, I, on behalf of all my beloved present companions, extend a warm and a hearty welcome to our renowned and esteemed NAC peer team members. सर आप लीजिए थैंक यू बेटा Sir, now you may have the floor. My dear, our pleasure on behalf of the NAC peer team, it is my pleasure. It is my pleasure to interact with you all. First, I wish a very good, pleasant afternoon for you. It is my pleasure. So, you must be knowing the NAC PhD is here in this college for 3 days. That is 30th, 31st and 1st. To assess the NAC PhD had already visited for the first cycle and second cycle. What benefit you got out of the NAC
PhD, if you know anybody, please raise your hand and tell us. Now also we have come. What benefit you expect from the dark PhD? As a student, you please tell us what benefit you want to get from the dark PhD. Please tell. No. Then another question. Why you have prepared this college for your study? Please. Introduce yourself and Avdesh from first year commerce, and I'm an athlete. I represent India in swimming, and I have chosen this college for two reasons. The vision of my college was not only to build our country just educationally, but even in the sports. So it was my great pleasure to get into this college and institution because they took my vision of building sports in our country very seriously. I have I train for like 9 to 10 hours a day. So I get very less time to manage my studies. I was a science student in this college itself, and I shifted from science to commerce. And there were people, and I think the teaching staff helped me more than anyone else because I get very less time, and managing the practicals and everything was quite difficult for me. So getting into this college was like they helped me out of their working hours. Just for me, they did everything. Like they used to teach me, they used to help me with very small things. And then when I finally passed out my 12th standard and I wanted to get into seniors, I was like, sir, I can't make it in science now because I want to continue with my sports. And I was very serious about my sports. So said, Sport. yes, sir. So and our principal and our institution took it very seriously and helped me to get into commerce. And now I'm doing quite well in the commerce, and I think college has helped me more than anyone else right now, being so far a student of this institution. Okay. Thank you, sir. Anybody else? No, I will put you. Yes. Sir, my name is Rohit Patil. I am from Physics Department, MSc Physics, first year. So, my first year is in this college. So I chose this college because this is the only college which we have material science as a majors in physics in our university. So it offers 15 seats to material science students. That's why I chose the college. And our library, those are good facilities. So I don't have to run around for my educational work. So it is better being in this college other than any other college. So this college has helped me a lot in my majors, means MSc course. So that it will be Are better. you reading material science? Yes, sir. Material science. Yes, sir. So are you satisfied with the teaching? Yes, sir. Definitely, sir. Very much satisfied. Yes, sir. Definitely. There is no problem. There is no problem at all. Okay. Thank you. Could you please tell me two important difficulties which you face in this course? Two important difficulties. Which you come across in this college? कोई और स्टेशन से थोड़ा दूर है बस। स्टेशन से थोड़ा दूर है, मतलब मैं बहुत दूर से आता हूँ, तो मुझे प्रॉब्लम हो जाता है। तो मेरे को 2 घंटा ट्रैवल करना पड़ता है, तब मैं यहाँ के पहुँचता हूँ। और फिर से मेरे को चल के आना पड़ता है। तो we don't have boys hostel also. But there is no demand from the student side. Good afternoon, sir. Myself Trisha Rajavar. I am a self-financing course, DY BAC.
Sir, I want to tell you that we don't face any difficulties or problem in this campus because the campus is huge and whatever amenities and infrastructure we were expecting from this college, we get more than that. So we are satisfied with it. For example, For example, like the teaching method, most of the college they go for the chalk and board method, but here we have GDs, then guest lectures are there. We also get some kind of campus selections. Various offers are being, we get various offers from other institutions, internships. We have Tata courses, and SGB is also done, self-development program. So we have our college has conducted 10 modules, and also meditation is being done and relaxation in every lecture to refresh our minds. Okay, please sit down. Now I am handing over. yes, I wish to ask. If you want to see your college the next 10 years down the line, then you become the alumni. So you, one or two can give suggestions that how the college can have a roadmap for the next 10 years, so that this college can outbid some other leading colleges in Mumbai. Hello sir, myself Rajendra Loke. I am from Physics Department, MSc Physics. I think our college should be autonomous in terms of all departments, so that our exams will be conducted over here only. So we don't need to go to university, or admission process should be simpler. And we are well-known college in, I think, in Mumbai, and our library are well equipped. We are better than any other college in this area. So I think we should be autonomous. Any other suggestions? Any other suggestions? So that can make the university, the institution as a visible and the branding. It is a branded institution, but it will be more visible. Please tell us so that we can include it in our report. Reports and Your suggestions, so we will include in our report. well, you circulate to somebody. If somebody can speak from the one back. Back side. Last row. Last row. Nobody wants to speak. Let me tell you, friends, it looks from your silence that you think that your college is the best and there is no further chances of improvement. Let me tell you, there is no institution which becomes perfect. However good the institution may be, there are always the chances of making it the best. And this process is ongoing and it has to continue. If you come out with some suggestions, sir has asked you for some suggestions, how to make this college as one of the topmost colleges of India, whose name is known, whose fame is known in the whole of the country, how to make it an institution of national fame. In that, we are asking you, because you are the students of this college, if you have to add something, because हम अपनी रिपोर्ट में लिखने वाले हैं कि बच्चे लोग ये कह रहे हैं कि इस कॉलेज को और बढ़िया बनाया जा सकता है. If you come out with some suggestions, it's very fine, because many things are still needed to make it the best college. So, we all of us three are time and again appealing you, kindly come forward, suggest us what are the other measures to be taken, the other facilities to be created in the institution, and what are the facilities which need more improvement. If you come out, we'll reflect it in the report, and your college will become one of the topmost colleges. So you'll be doing a great service to this institution by coming forward with your suggestions. Thank you. I'm from FIBMS. So right now we don't need any such more additions in our college because I feel that we are satisfied with what we have
in case in future if we need, we are sure that our college will provide with all the amenities which we require. Thank you, sir. No, addition means what? Addition. What in addition or something you told? I could not hear properly. So I said that in case if we need any additions in the future, we are sure that our college will provide us with those amenities. You can advise on the lines of some adding What- new what- course. what you want? कुछ ऐसा कि सर आप ये कोर्स ऐड करें, ये कोर्स ऐड करें. That because there is a lot of scope. Highly modernized courses are coming. जो employment market में बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. Skill development courses हैं, value added courses हैं. Something on the line you can suggest कि आप बॉम्बे को ज़्यादा जानते हैं कि यहाँ की मार्केट के हिसाब से क्या नीड है, कौन से कोर्सेज और ऐड हो सकते हैं, वही सजेस्ट करिए आप. Yes. Are you satisfied with the health services here? Medical Yes. Good evening, sir. Myself Pooja Shikre from Accounting and Finance Department. As per you said that very value-added courses are being added in the college. As we have soft skill course, value-added course, I only approach for it and it is very good. As well as we have extension cell activities, Avishkar, the college also help us for the research projects. As well, many projects are being many seminars, international conferences are being held in the college. So everything is available here. Thank you. Thank you, sir. Yes, give it. I want to mention about research. I am MSc Part 2 student, chemistry. So apart from Avishkar, we also have available apparatus for our own research. We have published 18 research from chemistry department and even in bioanalytical wherever is there. Apart from Avishkar, student also perform some research for the international research journal publications. And all chemicals which we need is given by our college and respective departments. Good afternoon, sir. I'm from chemistry department. I want to say that our all departments are going good in the research, but our college, I think that it should increase the PhD seats because so that we can do our whole education of masters in here and the PhD also here, so that kind of quality of research will be increased and the experiences of that all the scientists will be helpful for the juniors also, so they can also go for research field. Very good. Thank you, sir. So overall, the students, they do not want any improvement of the course. They want the college as it is. Microbiology, part 1. As everyone said, there is no problem as such, but there were some solutions which have been made to Yes. and that has been rectified. For example, being a very good library facilities in our college, there was some, since the books are very costly, we were expecting some e-book facilities and departmental level facilities that has been updated. And regarding seeing our college after 10 years down the line as an alumni, I would like to see our college to be expanded in terms of students, enrollment of students, as well as teacher-student participation, and also the autonomous part which he explained. Yeah, that's it from my side. For example, our students, those who are staying in the hostel, if they want to have access to the library beyond on the holiday normally is closed. So in most of the colleges, we get the demand from the students for a library to open for 24/7. So it's because that would be beneficial for those who are staying in hostels. Alright, so this type of suggestions we want, so that will be the library, you can have access to the books and you can make use of the best books available in the library, like that. And you may have medical services in the college, sports services, counseling, like career counseling, computer examination counseling. So these are the activities which will make you employable. Alright, so that you can compete in the job market and get dignified and lucrative, gainful employees. Library. So anytime we can go to a library to fetch any books. And sir, you told about healthcare. I personally have experience.
on first floor admin building we have a very dignified doctor जिन्होंने मुझे 2 बार treat किया है. So and one thing that our college, the best thing I think is that we have a earn and learn scheme in our college, in which the students, they are being given some tasks to complete, and hours is noted down. So by hours we are being paid, and the jobs are like we will take the digital attendance in our class. The students, those who don't have lectures at that time, they will come and take the attendance. The next thing we do is, as we can see, we have a nice garden also, so watering the plants is done. Then small scale projects which are beneficial to our college itself. Like when I was in FIBAC, now I'm a FIBAC student, I along with my team, we have done a most probable number MPN index of our cooler samples, and we have submitted the report to our principal sir, and he has we have seen some change. We have seen a lot of changes. He has changed the purifiers also in that. So this is the best thing in our college, that we have earn and learn scheme for and this scheme, it will tell us that no work is, कोई भी काम छोटा नहीं होता है. So that is, I think, the best part. Thank you. So thank you very much for your nice introduction. On behalf of the NAC PT, I wish all of you a bright future. Thank you. I request my friend to please deliver the vote of thanks. When thankfulness overflows a swelling heart, it breathes in free praises. Let there be for every pulse a thanksgiving, and for breath a speech. I, on behalf of the present students, thank the NACPEER team for spending their valuable time with us. Thank you so much. ओळख करून देते तुम्हाला आजचे आपले जे माननीय NACPEER टीमचे मेंबर्स आणि चेअरमन आणि कोऑर्डिनेटर फॅमिली आहे, तर मी पहिल्यांदा त्यांची आपल्याला ओळख करून देते. NACPEER टीम कमिटीचे चेअरमन आहेत प्रोफेसर साहू. त्यानंतर NACPEER टीमचे कोऑर्डिनेटर आहेत डॉक्टर S.L. गुप्ता सर, आणि NACPEER टीमचे मेंबर आहेत प्रोफेसर S.K. स्वैन. NACPEER टीम से तरफ से मेरा सब पेरेंट्स अभिभावक नमस्कार. हम 3 दिन के लिए विजिट करने के लिए खालसा के लिए मैं कुछ पूछना नहीं, मैं सिर्फ जानना चाहता हूँ. आप सब तो बड़े लोग हैं, वयस्क लोग भी है. मुझे उतना बता ही दीजिए, आप कुछ चाहेंगे तो NACPEER टीम से आप कॉलेज का कुछ इम्प्रूवमेंट डेवलपमेंट करने के लिए आपका मन में कुछ आइडिया है तो, कुछ भावना है तो हमको थोड़ा खोल कर बताइए, क्योंकि आपका जो भावना है, आपका जो विचार है, हम ठीक है तो हम हमारा रिपोर्ट में लिखेंगे. इसलिए आप एक कॉलेज का कैसे इम्प्रूवमेंट करना है करेंगे, कैसे इम्प्रूवमेंट होगा, कैसे और बेहतर कॉलेज आगे बढ़ेगा, आपका मन में जो कुछ आप है थोड़ा खोल कर बताए. प्लीज गिव योर सजेशन. हाँ, हिंदी में. नमस्कार, मैं NACPEER टीम की तरफ से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप यहाँ आए हैं, अपना
अपने कीमती समय निकाल के। हमारा यहाँ आपको बुलाने का और आपसे बात करने का, भेंट करने का एक ही मात्र कारण है कि आपकी बच्चियाँ इस कॉलेज में पढ़ रहे हैं। जब पेरेंट्स किसी कॉलेज में बच्चों को एडमिशन दिलवाने जाते हैं तो दिमाग में कुछ रखते जाते हैं, वहाँ बढ़िया पढ़ाई मिले, वहाँ बढ़िया कंप्यूटर की ट्रेनिंग हो, वहाँ उनको नॉलेज अच्छी मिले, कल को बच्ची का कैरियर अच्छा बने। आजकल के युग में ये है कि बच्चा कुछ बन जाए, कहीं कुछ पहुँच जाए, कहीं कोई अच्छी पढ़ाई हो। हम ये जानना चाहते हैं आपसे, क्या आप मुतमईन हैं, खुश हैं आपके बच्चे जो जहाँ पढ़ रहे हैं? क्या आपको अच्छा लगता है? क्या आपका डिसीजन, यहाँ और भी कई कॉलेज होंगे, बॉम्बे है, आप तो किसी कॉलेज में भी बच्चे को रख सकते थे, आपका यहाँ क्या कारण हो सकता है? पहला मेरा सवाल ये होगा कि बच्चे को इस कॉलेज में एडमिशन दिलवाने का क्या कारण था? ये कॉलेज वाकई कुछ डिफरेंट था कि आपने बच्चे को यहाँ एडमिशन दिलवाया? नंबर 2, जो बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अब आपका भी अनुभव इस कॉलेज के बारे में हो गया, तो उस अनुभव के द्वारा, उसके तौर पे आप हमको ये भी बताएंगे कि इस कॉलेज को और बढ़िया कैसे बनाया जाए, जो कल और 5 साल के बाद, 10 साल के बाद यहाँ बच्चे आएंगे, क्या क्या खास और होना चाहिए? कौन सी कमियां, कमजोरियां आपके बच्चे आपसे शेयर करते होंगे घर में जाके कि ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है? केवल ही बच्चे मम्मी के साथ शेयर करते हैं, पापा के साथ शेयर करते हैं। उसके बिना पे हम आपसे जानना चाहते हैं कि इस कॉलेज को अच्छा कैसे बनाया जाए, क्योंकि आपका जो विचार हम सुनेंगे, जो सुझाव आपका होगा, हम अपनी रिपोर्ट में लिखेंगे और उससे बहुत बड़ा फायदा होगा इस कॉलेज को और आपके बच्चों को जो कल यहाँ पढ़े। ये जानना चाहते हैं। My daughter is in आप second थोड़ा सा year. इंट्रोड्यूक्शन देके आपका नाम बोलिए आप। जरूर। मैं Mrs. Piali De. My daughter is in second year BSc. She is doing microbiology, and I came to know that 2 of the members team are from Odisha, and I myself am from Odisha. Yeah. So, sir, मैं Rourkela belong to. I'm actually Bengali, but I can speak and write Odia fluently. And I'm being a doting mother. I did a good R&D before sending my daughter to this college. I'm staying here only. I'm in Mumbai, and I can say that this is one of the greatest college of Navi Mumbai. It provides all the facilities that is needed for a child for development. All-round development हम बोल सकते हैं क्योंकि बच्चों को बहुत ज़्यादा यहाँ फ्लरिश करने का मौका मिल रहा है। अभी मैं जो देख रही हूँ, my daughter is in second year BSc, तो मैं 2 साल से देख रही हूँ, फॉलो कर रही हूँ, and my daughter is very free with me. So she keeps on telling me whatever is happening in the college. तो मुझे कोई कंप्लेंट तो है नहीं, टीचर्स आर वेरी कोऑपरेटिव, and she is doing some basic courses also beside all माइक्रोबायोलॉजी का जो जनरल कोर्स है उसके साथ साथ बेसिक कोर्सेज भी कुछ कर रही है, जैसे हेमाटोलॉजी में उसने किया है कोर्स, अभी बायोटेक में कर रही है, शी इज डूइंग डिप्लोमा इन बायोटेक, ऑलरेडी शी डिड कोर्स इन बायोटेक previous year also, and there are some personal development programs also. The college has tie up with TIS. They come and take a they had some program, but my daughter is not there. You please give us some suggestions. Suggestions. How to add something more so that the college will go more and more high. Of course, मैंने इनके labs देखे, laboratories देखे, laboratories तो बहुत अच्छे हैं. बहुत अच्छा है, laboratory बहुत अच्छा है, बहुत equipment है. मुंबई के भी कुछ labs देखे मैंने. कॉलेज में हम दिखा बहुत अच्छा है. हाँ जी, बच्चों को बहुत सारे मतलब facilities provide किए जाते हैं. One suggestion from me is शायद रिक्रूटमेंट का और थोड़ा ज़्यादा फैसिलिटीज हो तो और अच्छे होते. हम बोलने के बाद आप क्यों बोले? नहीं, वो मैं
बोलने वाली थी सर, क्योंकि ऑब्वियसली मैं बोलने वाली थी, वो मेरा लास्ट वाला ऑप्शन था। Of course मैं बोलने वाली थी, but I am very happy with this college. I must say, thank you very much. My name is Gaurav Shikre and staying in Vasi Sector 6. My daughter studying there. This one lab. यहाँ पे मेरी डॉटर को पिछले 2 साल से पढ़ रही है। काफ़ी सारा कॉलेज का मुआयना करने के बाद हमें ऐसा लगा कि KBP is the best college in Navi Mumbai education hub, because जैसे कि अभी मैम ने कहा, बहुत सारी एक्टिविटीज यहाँ पे है, बहुत सारी फैसिलिटीज यहाँ पे है। टीचिंग मेथड इज द बेस्ट टीचिंग मेथड है, कोऑपरेटिव फैकल्टीज, बावजूद इसके यहाँ पे जो कहीं नहीं है ऐसा एक ऑप्शन बच्चों के लिए है, जो है अर्न एंड लर्न फैसिलिटी। हम सब दिखाए भाई, शायद ही तुम यदि कुछ कहना चाहिए, कुछ सजेशन देंगे, सजेशन दे आप, सजेशन दे, इसको कैसे ह्यूमन बीइंग्स आर वांट्स आर अनलिमिटेड। या हाँ, सो कोई सजेशन दो और तो कॉलेज को कैसे बढ़ाएंगे आगे। डे बाय डे देयर आर मेनी इम्प्रूवमेंट आते हैं, बहुत सारी तरक्की हो रही है। स्मॉल थिंग्स होंगे जो जिसको हम सजेशन के लिए कह नहीं सकते, क्योंकि सजेशन देने इतने हम सब बड़े नहीं हैं। आप लोग यहाँ पे बैठे हैं हमारे सामने, जिसको कैसे इम्प्रूव करना है, क्या ऐसी थिंग्स है जो नहीं हो रही है, सबसे पहले आपके नज़र में आएंगी। हम और कोई कॉलेजेस से कंपेयर में अगर हम बात करें तो हमें ऐसा नज़र नहीं आता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ 100% सब कुछ है, बट यहाँ हम बहुत खुश हैं। जैसे कि डे बाय डे हमारे बच्चे, मेरी बेटी मुझे अपडेट देती है, जो कॉलेज में होना चाहिए वो एकदम कंफर्टनेस यहाँ पे है, माहौल है, एटमॉस्फेयर है, टीचिंग मेथड है। कहाँ पढ़ते हैं? कौन सा सब्जेक्ट? सेकेंड ईयर में है BAF अकाउंटिंग फाइनेंस। अच्छा अकाउंटिंग। Yeah. So I am very happy with this college. Thank you. If I become a future sports person, Yeah. yes sir. So मैं चाहता हूँ कि कॉलेज में काफ़ी सारी आपने देख लिया, जैसे आपने मुआयना किया, काफ़ी सारी सुविधाएं हैं। कॉलेज में अप्रोक्स 7,000 बच्चे रहेंगे, मेरा जजमेंट है। 4,000 1% बच्चे स्पोर्ट्स में नहीं है। सो स्पोर्ट्स कल्चर इंडिविजुअल बहुत प्रोत्साहन मिलता है। मेरी बेटी को बोलो या जो दूसरे सीधे बास्केटबॉल प्लेयर और स्विमर, ओके। इंडिविजुअल लेवल तक तो मिल रहा है, मगर मेरा ये कहना है कि ये नेशनल लेवल स्विमिंग और बेस बढ़े। कॉलेज में अगर 4,000 बच्चे हैं तो 1% 40 होते, उतने भी बच्चे नहीं आ रहे। भले फिर स्पोर्ट्स कोई भी हो, जो बच्चों को अच्छा लगे। इंफ्रास्ट्रक्चर कॉलेज के पास बहुत है, तो कॉलेज बेस बहुत बड़ा बना, ताकि अगर 1% बच्चे स्पोर्ट्स खेले तो उसमें से 1% नेशनल लेवल पे जाएंगे और शायद उसमें से 0.5% इंटरनेशनल पहुंचेंगे। अच्छा, तुम हमको सजेशन दो, स्पोर्ट्स फैसिलिटी और कैसे बढ़ाया जाएगा, हम हमारा रिपोर्ट में लिखेंगे। स्पोर्ट्स फैसिलिटी हमने जो दिखा, जिम खाना है, जिम्नाजियम है, प्लेग्राउंड है, हम देखा। और क्या चाहिए आपको स्पोर्ट्स फैसिलिटी में? इस लोकल नीड क्या है, नेशनल नीड क्या है, इससे देखकर हमको बताओ क्या स्पोर्ट्स फैसिलिटी चाहिए। सर पहली नीड तो ये है कि इंफ्रास्ट्रक्चर आज की तारीख में मुंबई में मिल जाता है सर। कहीं शायद कम पेमेंट देना पड़े, कहीं ज़्यादा देना पड़े। सरकारी है तो कम देना पड़ता है, या प्राइवेट में तो ज़्यादा देना पड़ता है। मगर आपको पहले अंदर से इच्छा होनी चाहिए, और खाली बच्चों को इच्छा होनी चाहिए कि पेरेंट्स उनको उत्तेजित करनी चाहिए। पेरेंट्स को एक ही हो गया कि पढ़ो और आगे बढ़ो। बाकी स्पोर्ट्स में पेरेंट्स बहुत निगलेक्ट करते हैं बच्चों को। अगर जो उसमें टैलेंट है फिर भी, तो पेरेंट्स ने सपोर्ट करना चाहिए, फिर बच्चे आगे बढ़ेंगे। फिर कॉलेज का रोल आता है कि आप उन्हें काउंसलिंग करा, उन्हें बड़े जो कोचेस हैं या काउंसिल है, स्पोर्ट्स काउंसिलर, उनसे उनको बताइए कि स्पोर्ट्स का बेनिफिट क्या है और क्या करना चाहिए। फिर बच्चों को जो स्पोर्ट्स अच्छा लगता है उसमें आप उसे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि कॉलेज के पास बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्राउंड, इंडोर आउटडोर बहुत स्पेस है, इसका यूटिलाइजेशन हो सकता है। और कॉलेज इंडिविजुअल लेवल पे ऑलरेडी सपोर्ट कर रहे हैं, मगर ये 2, 4 या 10 लड़कों से या बच्चों से रिजल्ट नहीं मिल रहा है।
बेसिक ये है कि बहुत ज्यादा दूध होगा तो मलाई ज्यादा आएगी, मलाई ज्यादा होगी तो मक्खन ज्यादा निकलेगा। यू मीन टू से मैं जो आपसे अभी जो आपने बोला कि कॉलेज को चाहिए कि ज्यादा बच्चों को स्पोर्ट्स में इनकरेज करे, पार्टिसिपेशन ऑफ द स्टूडेंट्स इन ए लार्ज नंबर, है ना, बहुत कम नंबर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्या कारण हो सकता है, क्यों कम बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे हैं? सर कारण कई हो सकते हैं। पहले कारण ये हो सकता है कि एक तो अवेयरनेस कम है स्पोर्ट्स में, बच्चों को मेहनत नहीं करना है, फिजिकल वर्क बच्चों को नहीं चाहिए। बच्चों को गेम दे दो, टीवी दे दो, फेसबुक और बाकी तो है वो आप मेरे से ज्यादा उसमें एक्सपर्ट तो हैं। कॉलेज को बच्चों को अवेयरनेस देनी चाहिए, यस, उनको पार्टिसिपेशन के लिए बोलना चाहिए, रादर उनके पेरेंट्स को पहले पेरेंट्स को, क्योंकि पेरेंट्स हाँ बोलेंगे तो बच्चे जाएंगे आगे। बाकी कॉलेज में फैसिलिटीज ठीक, फैसिलिटीज है, आप उसे उठाने के लिए नंबर आने चाहिए, लेकिन नंबर नहीं आ रहा। अब जिम इतना बढ़िया बना कर रखा है, कितने बच्चे कर रहे हैं। सो ये मेरा कहना है कि मैक्सिमम परसेंटेज है अवेयरनेस रिगार्डिंग स्पोर्ट्स। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम प्रभाकर निम्बाकर। मेरी लड़की इस कॉलेज में 8 में पढ़ रही है, लास्ट ईयर में। जब मैंने यहाँ एडमिशन लिया तो बहुत कुछ अच्छा लगा। यहाँ पे जैसे उससे सुनता हूँ बहुत सारी फैसिलिटी सुविधा उसको मिलती है, लेकिन अभी जो आप लोग टीम ने जो कुछ पूछा उसके बारे में मेरे को कुछ बोलना है। जैसे कि कॉलेज में BA के बाद प्रॉब्लम आता है MA करने के लिए, कुछ सब्जेक्ट में ये भी यहाँ नहीं होता। जैसे कि साइकोलॉजी का है, साइकोलॉजी भी यहाँ पे ग्रेजुएशन पूरा नहीं कर सकती, SY तक है। तो ऐसे में ऐसे सब्जेक्ट में अगर इम्प्रूव हो जाएगा तो स्टूडेंट को ग्रेजुएशन के बाद कहीं मतलब जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो यहाँ पे वो अपना कोर्स पूरा कर सकता है। ये मेरा बहुत सजेशन है, अगर आप इस पर ध्यान करेंगे तो बहुत सारे विद्यार्थियों का अच्छा सुविधा मिल जाएगी। धन्यवाद। चेतन देखा है, मेरी सिस्टर इधर एमकॉम फर्स्ट ईयर में है। कॉलेज तो बहुत अच्छा, मतलब इधर बहुत सारी अच्छी फैसिलिटीज है, बट एक सजेशन मतलब उनको मतलब रिक्रूटमेंट के लिए मतलब इंटरव्यू सेशन एंड अदर एप्टीट्यूड वगैरह वो सब होने चाहिए। और उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए गाइडेंस भी होना चाहिए, मतलब साइड बाय साइड, मतलब बैंक PO एग्जाम के लिए और MPSC UPSC के लिए, मीन्स that give them benefits for their future careers also. That's all. ठीक है, थैंक यू। So thank you very much for the interaction. You have spent a lot of you have shown lot of interest. So thank you very much for your interest. Yes. Good evening, friends. It's my pleasure to welcome and introduce the eminent members of the NAC peer team to you. Let me first introduce Chairman of this committee, Professor B.K. Sahu. Then we have Coordinator, Dr. S.L. Gupta sir. And we have Professor S.K. Swan, who is a member of this committee. Thank you so much. Welcome. I would like to request our Honorable ex-MP, Mr. Sanjeev Ji Naik, to felicitate the Honorable NAC committee members. Thank you, sir. I would like to call Mr. Raju Shinde ji to welcome the other members of the NAC committee. Okay, sir. Now I would like to welcome Mr. Jalawala to welcome the committee member. Thank you
the NAGPT, it is my pleasure to have interaction with you all. Of course, today morning we have already interacted with him from the management side. So I will ask you, how many of you know that the NAG committee, NAGPT, is visiting your college? How many of you? Everyone. know that. And last from 15 years we know that. All of you are aware of it. So I will ask you, who have already interacted with it, you please tell us, and alumni is a strong association. What we gathered information. It is a very strong association, and alumni is also doing very good stuff. They are helping the students also. They are doing tremendous job. So you please suggest us, you please give us some more valuable suggestions so that we can incorporate those suggestions in our. Sure. Any of you, backside, please come up with the new suggestions, how to improve, how to develop this college further. My name is Gokul Kamath, and I was in this college about 20 years back. I did my junior college here, and then I did my BSc in organic chemistry here, after which I went to University of Mumbai and did my MSc as well. In fact, in all humility, I came first in this college in BSc and third overall, right? And after doing my masters, I was a sports person. I was into swimming, and I chose to become a swimming coach by choice, though I had an offer to do a PhD abroad as well. And I think it's God's grace that I've been a good coach, and I've been, all my life I've been in Navi Mumbai and grown around this college, and I stay in the area as well. And I've actually seen this college come up from scratch. The change the college has in the last 5 or 8 years is massive. When I was here, even this auditorium was not here, right? And so many changes that the college has developed. I'm associated with the college. I head a sports center nearby, which is owned by the father. So you please give us some suggestions on how to develop sports. So excuse me, give me a minute. What more infrastructure you want? Yes, I'll come to the point. So I head a sports center which is nearby, okay, and owned by Father Animal School. And we have a tie-up with the college where a lot of students from this college also swim. I am a swimming coach, but I've been a coach for the Indian swimming team as well. And we have a lot of swimmers who train with us. So I feel the college has developed overall very well, great branches, especially chemistry, since I have a chemistry background. But I feel that the sports is something that is vital today. Right? Athletes are being recognized, being awarded, and I think this is something that the college can focus upon. That's another dimension for the college to look at, rather than just education and overall development. I think this is something that the college should take some steps to improve. Right? Not only infrastructure, but also creating an interest in sports. Right? Thank you very much. Next. I'm Advocate Ganesh Gilbile. Done my LLB from D.Y. Patil College. Done my BA in economics in this college in the year 2005. About this, what my learned friend says, infrastructure is there about the sports problem. There is more, क्योंकि जब हम लोग यहाँ पे थे तभी ये सब कुछ नहीं था, लेकिन आज जो हमने जो कॉलेज को सजेस्ट किया था लास्ट 5 to 6 years ago कि बाबा हमारे यहाँ पे स्पोर्ट्स में ज़्यादा कुछ है नहीं, इसके लिए आप कुछ ऐसा करो, हम लोग भी आपको सपोर्ट करते हैं। अगर आप आज देखते हो हमारे कॉलेज में, तो यहाँ पे बहुत अच्छा जो हमारा पहले से जो बड़ा ग्राउंड था, वहाँ पे उन्होंने बहुत सारा चीज़ें दिया है हमको, जैसे कि क्रिकेट के लिए दिया है, वॉलीबॉल के लिए है, जो उन्होंने बना के दिया हम लोग को, टेनिस कोर्ट है। अभी क्या चाहिए सर? आने वाले दिनों में
कैसा है, अगर हम लोग जो हम कॉलेज को बोलते हैं वो हमको प्रोवाइड करते हैं। अभी जैसा सर ने कहा कि बाबा स्विमिंग के लिए हमारे यहाँ पे स्कोप है, तो हम लोग अगर कॉलेज को बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ पे कोई स्विमिंग के लिए टैंक बना के दे सकते हैं, अगर हमारे सर खुद कोच कर सकते हैं, तो मैं कॉलेज को वही सजेस्ट करूंगा कि बाबा अगर हमारे पास इतने इंटरनेशनल लेवल के कोच है तो एक टाइम बना दो हमारे लिए बस। I was expecting something more from him. When he said that he is a sportsman, I was expecting, but he speaks to the responsibility of the college authority. He said college may take a step. I wanted to know from him what are the specific games, specific instruments that you want to have in your college. Accordingly, Before you talk, can I speak? One thing I will place on record, and that is a noteworthy contribution made by the alumni of this college. We have gone through and we have been told that a lot of it you have been doing. When we had interaction with the parents, some of them told us that there is sports infrastructure, but not even 1% children are coming, not even 1%. Because the total strength of this college is for approximately 4,000. 1% means that should have been at least, that this is what he told me, that not even 10, 20 students are actively participating in sports. You see, what contribution I am expecting from him, because it's very wonderful that you are the product of this college and you have made your name at international level. I always give the example of one of the colleges, that is Pune Sir-based SP College, where most of the athletics and the sports are being promoted by the alumni. All the alumni like you, who are very well trained, they devote 2 hours daily in the college. Recently I had been in other part of Maharashtra. There also I was told that the alumni who are very well trained in different sports and games, they devote 2 to 3 hours. So kindly think on those lines, because this college is definitely having good infrastructure and it can be made better also. But your contribution as an alumni, apart from finance, which you have been very generous, but this will be your real contribution if you could come, devote 2-3 hours daily for the children, ask them to come out and arrange a coaching for 100 children within the college in the same infrastructure. I am sure that will inspire many more sports people, some students of this college. This is what I want. No, you can say. Is there any alumni association? Registered association? Yes. Registered. हमने जब कॉलेज को सजेस्ट किया था, जब हम लोग यहाँ से पास आउट होके निकले थे, तभी ये सब नहीं था। लेकिन जब हमको लगा कि बाबा हमारे पास इतना बड़ा ग्राउंड है, तब हमने जो हमारे पहले के प्रिंसिपल थे उनको सजेस्ट किया था कि बाबा ये सब होना बनता है हमारे यहाँ पे, तभी वो यहाँ पे बनाया गया। अब हम आपसे सिर्फ ये जानना चाहते हैं, हमें बताएं कि और इस कॉलेज को बढ़िया कैसे बनाएं? प्लेसमेंट का ऊपर बोलिए कि कुछ ना कुछ आप हाउ यू कैन हेल्प और बढ़िया कैसे बनाएं ताकि हम प्लेसमेंट। Good evening, myself Shifty. I have passed out my MSc with Modern College in 2008. So I have been working with the industry. One of the weaknesses I find in today's education system is practical aspects of chemistry are not taught at the college level. So although theoretically they are doing well, but chromatography and spectroscopy are some of the things which are practically very important to students of today. So we have an institute. I am associated with SIS Institute of Chromatography and Spectroscopy, which is situated in Nehru, wherein we teach teachers who are dealing with these subjects and students who are aspiring to make career in industry after doing their BSc or MSc. So we teach students who have passed out from MSc on practical aspects of chemistry. So we give hands-on training on these instruments and allow them to work on it. And recently we have trained one of the students who last year only passed out from this college, Ms. Bela Shah. She would also like to share her experience with you. So
this is one of the things I think college can work on. They can train their professors. How it can be conducted? Yeah, they can train their professors on what is going on in the industry, what is the requirement of the industry for student to work in the industry, and they can also the institute and college connectivity. yes, industry and academia participation is one of the things I would like to suggest. Bela Shah will also share her experience, how it has helped her to in growth of her career. I tell you, Yeah. the college cannot change the practical syllabus because that is the best as for that is been done as per the curricula of Bombay University because it is an affiliated university to Mumbai University. It is affiliated to Bombay University, so that cannot be changed. Okay. So you are telling, suppose chromatography is there. Today morning I inquired with them also. I saw the AS is there, atomic atom spectrometer, very costly equipment. Even you will not find such type of instruments in any university. I told every one of them because I am also basically I am a man of chemistry. So I told them. Then I asked them who uses it, who is handling it. Then the teachers told me that we have some trained teachers. They are handling it. Then I said, you please try, when you are having a common equipment laboratory, you please try to engage one technical assistant, at least a technical assistant, qualified technical assistant, who can help all the users, whoever wants to use any instrument, because it is a common instrument laboratory. He also can come and take the facilities of that laboratory. But they told, no, our teachers are, some teachers are trained and they are dealing with those instruments. Gas chromatography is there, UV visible is there. Lastly, I saw IR also. Infrared is there. All the equipment which are needed, required for any industry, all the instruments are available. All the instruments are available. Yes, instruments are available. So now the question how to solve it, it is not in our hand. It is not in the hands of the level of NACA. It is in the hands of our college. The college can appoint a qualified technician. You please note it. Otherwise, he has to look after that laboratory. Otherwise, all the instruments will be spoiled. Once it is spoiled, it will be very difficult to repair it. Very costly. Yes, you must be knowing, yes. I am also a chemistry man. Atomic atom spectrometer, how costly it is. Gas chromatograph, then UV visible, infrared, carbon, hydrogen, nitrogen, sulfur, analyzer. Everything is there. Wonderful. So, you please tell yourself. So myself Bela Shah. I have passed out last year itself. So from my experience and my friends' experience, what is the difference? Just because I passed out from this college, then I went to SIS for training for 3 months, summer training. There I came to know they take training for 1 week for teachers, 1 week for college students. So after that training, what happens? The student is easily accepted in the industry. So what we are telling, the college should arrange it for their students that they get trained for 1 week only. They know the theory behind the instrument, they give exams about that. But when they see the machine, they are not able to recognize it. If I give an example, they have seen an elephant, they know it is grey color, it has a big trunk. But जब elephant देखेंगे तभी समझ में नहीं आता students को. Now you are working in that college, in No. this college? No. Now, right now I am an entrepreneur and it helped me with my own QC lab. Because I learned it for 3 months, but for example, if I learned it for 1 week also, I would know मेरी factory में बंदी ठीक कर रही है या नहीं. The technician is good or not. And that we cannot do it in our college because the machines, as you said, are very expensive. And over here, अगर एक student की गलती से अगर syringe भी टूट जाता है, तो it is on the college.
they know the theoretical aspect, Be they know the specific. practical. That means you want 1 week training for the students. Yeah, as well as teachers. Yes. Now you please take that responsibility. That is fine. Take that responsibility, Yeah, and you please find out a well-trained, qualified technician. Yes, sir. That would be. Technician. Yes, sir. And you please approach the principal or him, and you tell the principal to appoint him on temporary basis. Yes. So that all the students and teachers, they can at least they can have a class in that Yes. level. At least for a week. Yes. At least one hour or 2 hours in a week. In a week. You please take that responsibility. The problem will be solved. Okay? Thank you. Sir, I would like to add few points to her comments actually. Myself, Pramod Salunke, I am here since my junior college, then my senior college and post-graduation, everything from same college. And I'm ex-Reliance employee and currently I'm Which subject? microbiology. And I'm ex-Reliance employee and now I'm working with Sasmira. It's a research institute functional under Ministry of Textiles. And we are also engaged with the project work, defense and all the ministries and the funded projects are there with our institute. And as she said, it is we can understand there's a huge difference between your syllabus and what industry is expecting from a student. But from college point of view, it is very difficult to provide all those facilities to students under one roof. So being alumni, as my responsibility, how I am helping my college, why I am telling you, because I have got very good response. I am engaged, this college is engaged in 3 different projects. They are giving us research, technical consultancies in our projects. Okay, how they are helping us? Sir, we are procuring so many things from the big names like high medias and all. Okay, and we are asking them to provide live demonstration at our college for those instruments which are not there in our campus. So this is how we are allowing students to get the exposure to those things which are not there in the campus. Second thing, few equipments, just like as you said, IR and all, we are having scanning electron microscope, HPTLC, HPLC, even DSC, TJ. These are very sophisticated and high cost equipments. And all these students, regularly they are coming to our institute, they are taking trainings, and we are providing it free of cost because it's even our organization is a government funded organization, so they don't charge for students to get a training. And this is how we are helping them. Okay, and then what we see, aesthetically college is improved a lot, but maybe that point from my angle it is not that much important. If you see how if the infrastructural facilities, your common testing room is equipped with very sophisticated equipment, probably the students will, if they get proper training, probably they will come up with the, we don't know where, how, there's a good career opportunity for them, we can say. But sir, for appointing a technical person, I think college is already under process of implementing quality management system in common instrumentation facility. And second thing, they are regularly taking our assistants how to go by the laboratory designs and how to go for the accreditations and all. So they are doing their job. Probably it's a time-taking process. It may take 6 months or a year, or but definitely, we as an alumni, we should help them. This is what I want to say. Thanks. That is our joint. One more suggestion. The college has already generated 1.35 lakhs from the alumni. You are an alumni. You find out a person, capable person, and from the alumni fund, you can appoint a person, technical assistant, at least for 6 months or 1 year. Good suggestion, sir. Yeah, because you are all alumni, you can sit and you can say that he will be appointed and looking after that common laboratory, common equipment laboratory. And this much of salary, consolidated salary will be given to you per month. So that one. आप बोलेंगे क्या? सबका होने के बाद I will say that. जल्दी बोलो. I would just like to tell just one thing, like if people from this KVP college have got one perception that, okay, it's a science college, then more people come for science, and this commerce field is being suppressed somewhere in this college. I would just like to say one thing. Commerce, here, I have studied, I have taken 11th, 12th science and then come for commerce with BAF, and then I did my MCOM from this college.
I'll be continuing doing PhD and then I'm pursuing chartered accountancy. I would really like to tell you the commerce faculty here is very good. The way they are improving, like the 5 years I've given to this college, it's really good. And the teachers here, they are actually promoting students to actually go for the professional courses like chartered accountancy, company secretary. I just have one suggestion that the teachers here are good, but they are somewhere lacking in the syllabus. Like they need trained to teach the syllabus. And I don't know, I just felt like like in BAF, like I was studying, and there was syllabus that was related to the IPCC. So I just See, madam, syllabus, regarding syllabus, I can tell you, it is the problem of the university. It is not our problem. Okay, thank you very much. इनसे पहले हम लोगों ने लास्ट मीटिंग में हमारी IPSC की और एलुमनी की मीटिंग में थी, तभी हम लोगों ने कॉलेज को मैनेजमेंट को सजेस्ट किया था एंड वी आर प्लानिंग टू स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स। नॉट ओनली मतलब ये सिर्फ सिलेबस पढ़ने से अच्छा एंटरप्रेन्योर्स बनाना चाहते थे, तो अभी माननीय पंतप्रधान प्रधान जी महोदय ने स्किल डेवलपमेंट में कौशल विकास पे बहुत ज़्यादा जोर दिया है। तो प्रिंसिपल सर से हमारी जो बात हुई थी, तो हमने कहा था कि ऐसे कुछ प्रोग्राम्स हम लोग डेवलप करेंगे जो 6 मंथ्स 1 ईयर के रहेंगे, जिसमें हम लोग एंटरप्रेन्योर्स बनाएंगे। तो ये सजेशन हम लोगों ने लिया है और हम लोगों ने एक मीटिंग प्रिंसिपल सेक्रेटरी जो कौशल विकास के हैं मिस्टर दीपक कपूर, उनसे इस बारे में मीटिंग भी की थी। और गवर्नमेंट से अगर कुछ ऐसे स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स अगर मिलते हैं तो कॉलेज ये स्टेप उठाने वाले हैं। बहुत शुक्रिया चेयरमैन सर कि आज एलमेरा को आपने यहाँ बोलने का मौका दिया। हम जरूर चाहेंगे कि ये कॉलेज जो है सर, ये इस शहर का और आजू बाजू के सभी कॉलेजेस का एक बेस है। यहाँ से ही सब लोग, क्योंकि हम लोग जो है ये 25 इयर्स बैक यहाँ से चले गए थे। 25 साल में हमने देखा है कि भी कॉलेज को आगे बढ़ाना है। अभी यहाँ सर एक बहुत बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट आ रहा है, आपने सुना होगा, नवी मुंबई एयरपोर्ट। बड़ा यहाँ एक जैसे SEZ है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। रिलायंस का जो Jio ये मोबाइल है, इसका लॉन्चिंग ही यहाँ से हुआ है। यहाँ एक सबसे बड़ा सी पोर्ट है JNPT करके। तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सर यहाँ बहुत है, और इस कॉलेज ने भी बहुत ऐसे लोगों को यहाँ बनाया कि जिनको अपने जीवन में बहुत ही फायदा होता है। जैसे मेरे दोस्त हमारे इन्होंने कहा कि हम लोग स्किल डेवलपमेंट के, तो जैसे अभी एयरपोर्ट के लिए सर 20,000 लोगों की जरूरत है। तो हमने कॉलेज से बात किया है कि भाई क्या चाहिए इंडस्ट्री को। जैसे हमारे भाई साहब ने कहा कि व्हाट इंडस्ट्री वांट वो विल प्रोड्यूस। ऐसा नहीं कि यहाँ से बाद में फिर वो कॉलेज के बाहर जाते हैं, फिर बाद में वो कुछ ट्रेनिंग बाद में लेंगे, इससे बजे इधर ही ट्रेनिंग देंगे। तो इसके लिए हमारी कोशिश है, और आगे आने वाले जब हमारा नेक्स्ट जो एलुमनी के लोग हमारे जो मीटिंग है, जैसे हमारी नई कमेटी आई है, हम लोग सजेस्ट कर रहे हैं कि हर साल नए आइडियाज लोग के हम लोग आगे बढ़े। और आप जैसे कमेटी जो है उनके माध्यम से कॉलेज, और बेसिकली कॉलेज इसीलिए चाहे कि कम्युनिटी को बढ़ाए, और जो आपका बेसिक एम यही है कि ये सब सक्सेसफुल ग्राउंड लेवल तक जा रहे हैं कि नहीं, ये आपको देखना है। कॉलेज में तो सबका किताब एक ही है, लेकिन सिस्टम बराबर चल रही है, ये आप देखने के लिए आए हैं। तो वी आर वेरी प्राउड कि हम लोग जितने भी यहाँ आए हैं, हर साल हमने डेवलप देखा है, और हमारी खुद की कोशिश है और हमारी जिम्मेदारी है, फर्ज है हमारा एलुमनी का, कि जो स्टूडेंट्स पास आउट होते हैं, जो अच्छे स्टूडेंट्स हैं, जो अब्रॉड गए हैं, IAS बने हैं, IPS बने हैं, पॉलिटिक्स में है, सोशल इंजीनियरिंग में, हर जगह पर है, उनको लेकर हम आगे बढ़ा रहे हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि आप आज यहाँ आए और कमेटी को आपने मौका दिया। थैंक यू। Thank you very much.